Good morning, everyone. Today again, I will teach you the functions of list. So the first function you write pop, P-O-P. It is used to remove the item from the list. When we give an index number with pop, it removes if we give an index number, it removes an element from that given position. It removes elements from that given position. Just a minute. कुछ reflection issue था. It's okay now. Visibility is clear. I am clearly visible to you. Admit. Okay. Now next is your if no, as I told you, if index number is given, then it will remove from that position, and if no index number is given, then it will remove the last element. Then it will remove the last element. Next point. इसको मैं आपको practically कर दूं. For that I will share screen for you. The screen is shared. Okay, my video is pinned here. I will start Python. Start 3.9. And then I will use the function pop. Suppose we have a list. We can do directly here also. Suppose we have a list with elements 4, 5, 6, 7, 12, 12, 9, anything. And if I write a dot pop and then I give index number 2. Okay. So 0, 1, 2, 6 is removed here. Okay, it will display that also. And if now I write here the list again, the 6 will be, 6 is not there. Got it? When you use in interactive mode, no need to give print statement. Understood or not? It will delete the element as well as it will return the value also. And beside that, once will have written and a 6 is not there. Okay, next point is here. If I write a dot pop only, sorry, a dot pop only, round bracket start close. Remember that. Enter. So which element is deleted? 9. Okay. Now you print here. When no index number is given, by default it will delete 9. Give a thumbs up so that I will go ahead. Next function I will come. Initial is okay. Summary is okay. Rest. Pop is used to delete an element. बेटा आप लोग रेगुलरली क्लास नहीं अटेंड करते हैं तो दिक्कत आती है. Come to the point now. Next one I'm going to teach you here is remove. While pop remove function, R-E-M-O-V-E, remove. While pop removes an element whose position is given, whereas remove an element whose value is given. जैसे हमने कहा 4, तो 4 डिलीट होगा, 12 to 12.
it removes the first occurrence of the element. अगर दो 5 हैं तो first 5 is removed first. It removes the first occurrence of the element. So I will write it here, a dot remove, and then I will write it here as 5. This is the value, not the index number. This is the value I am writing, not the index number. So it will remove 5, but it will not return the value. Note down, सारे points note करो जो मैं बोलता रहता हूँ. It will remove the value, but it will not return the value. Return का मतलब हो वो display नहीं हो. समझ में आया? So if I write it a now, see 5 is not there. So one is to remove from the using the index number, and the second option is to remove using the value of the list. अगर 2 5 होता तो पहला 5 रिमूव होगा, दूसरा 5 फिर बाद में रिमूव होगा. क्लियर है? Okay, so I'll go to the next point, that is clear. ये मजेदार है. क्लियर क्या करता है? इट रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स. CLEAR, क्लियर. अभी दो एलिमेंट है, मुझे सारी लिस्ट क्लियर करनी है. A dot clear I will write. Simple. And if I write it A, see empty list has come. So it removes all elements from the list. Points लिखते जाओ. I can write this program in the script mode as well as in the interactive mode. So I am taking both the mode. So many time actually I am teaching in script mode only, but sometime I am teaching in interactive mode where I have to write only one line of command. So why I will go on necessary script and then run. यहाँ तो press enter करके काम चल जाता है. Clear है? Clear है. Next, count. अब तो ये पूरा लिस्ट ही चला गया. एक काम करते हैं, पहले लिस्ट क्रिएट कर लें. ओके, एक मिनट बंद कर दिया मैंने तो. पाइथन को ही बंद कर दिया गलती से. चुप जाओ. पाइथन स्टार्ट करें. गलती से बंद हो गया पाइथन. So here I will take a new list. A is equals to square bracket 2 7 6 2 9 5. Okay, so the list is given here. Now I just want to count how many elements are there. For that I will use count function. लिखो, it returns count, COUNT, count. It returns count. It returns the count of the item. So A, और कितना बार 2 है तो 2 बार है. तो पहले मैं 6 ले लेता हूं तो आपको बात समझ में आए. एंटर. 6 1 टाइम है. बट इफ आई राइट A dot count, suppose I write 2, then 2 times है. Understood? If you write simply A dot count, कुछ भी नहीं, then error आएगा. ये मत सोचना ये सब काउंट कर देगा. कम से कम कुछ आर्गुमेंट देखना है. Exactly one argument, and कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिएगा. That's why it is showing error. तो लिख लिया count. It function returns the count of the item that you passed as an argument. Next is your ये आपकी लिस्ट है. लिस्ट में फंक्शन है रिवर्स, REVERSE. अभी मैंने आपको मेहनत से प्रोग्राम बनाया था हाउ टू रिवर्स, but still function is also there, so you can directly reverse. Write it. It reverses the items of the list.
अब थोड़ा सा मैं इसको इंटरेक्टिव मोड में जाना चाहता हूँ, न्यू। सो एक तो मैंने प्रोग्राम कराया था, अब अगर क्वेश्चन आ जाए राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ लिस्ट एंड रिवर्स इट। अब अगर मान लो सिंपली क्वेश्चन आता है तब तो अब यू कैन यूज इट रिवर्स फंक्शन ऑल्सो, और यू कैन यूज द लॉजिक विच आई हैव टॉट यू हाउ टू रिवर्स. That was your program, and this is function given. What is basically a function? A function is a group of programming statement which perform certain type of actions, some specific work, that is a function. So reverse function बनाया तो उसका काम है reverse करना. तो वो काम तो प्रोग्रामिंग में कर चुके हैं, already we have made, but still we can use the function. Question है write a program to enter a list and reverse it. So सबसे पहले वही आपको जो मैंने समझाया था, n इज इक्वल टू int इनपुट. शिफ्ट बटन इसका सही नहीं चल रहा है. इनपुट, देखो शिफ्ट सही नहीं चल रहा है. एंटर n एलिमेंट्स इन अ लिस्ट. enter value of n, then take the list as empty list, then for I in range n and then d is equals to, if you want to take int, even you want to take character string, your wish. I normally take int input enter data value and then a dot append b print a print list values. बहुत समस्या हो रही है इसकी कीबोर्ड के साथ. एंड और ए मैंने प्रिंट कर दिया. अभी सिंपल किया है, ये अगर लूप से करना चाहो तो लूप से भी कर सकते हो. और आई इन रेंज एन, क्या मुसीबत है. आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉर आई इन ए. एक तरीका और सिखा देता हूँ, एंड यू सिंपली राइट इट प्रिंट आई. क्या हो रहा है, प्रिंट आई. ओके, सो रन इट. अभी तो सिर्फ लिस्ट आएगी. सो रिवर्स का प्रोग्राम बना रहे हैं, ऑलरेडी रिवर्स बना चुके हैं. आज ई कर दिया ऐसे ही. रन. सो सपोज 3 एलिमेंट्स, so 55, 33, 66 is displayed. Any doubt here? अभी कुछ प्रोग्रामिंग रिवर्स की नहीं की है. अब आप या तो अपना रिवर्स वाला प्रोग्राम जो मैंने बताया वो कर लो, या फिर सिंपली फंक्शन यूज कर लो. तो रिवर्स फंक्शन रिवर्सेस द आइटम्स ऑफ द लिस्ट. एक और लिखना इसमें, इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट. इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट. इसका मतलब हुआ आई हैव टू राइट हियर a डॉट रिवर्स. ओके, एंड देन अभी मैं सिंपल कर रहा हूं, प्रिंट a. ट्राई टू गेट दिस कॉन्सेप्ट. रन कर रहा हूं, मेरी बात को समझना. जैसे कि मैंने 3 एलिमेंट्स किया है, 11, 22, 44. तो अभी जो लिस्ट वैल्यू आई वो आपने क्या देखा, 11, 22, 44. ये जो आया ये रिवर्स आया. ठीक है, ओके. तो इसको चाहें तो हम फिर से लूप में भी कर सकते हैं. ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इस एलिमेंट को यहां से हटा दो. ठीक है, अब इसको रन करेंगे और यहां पर जो ये प्रिंट, इसको भी यहां पे अच्छे से कर लें.
कंट्रोल वी। आप सोचोगे कि जब रिवर्स फंक्शन था तो सर ने इतना टिपिकल प्रोग्रामिंग इसलिए सिखाई बेटा ताकि आपको लॉजिक्स डेवलप करना चाहिए, फ्यूचर में आपको ऐसे फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो अभी जो फंक्शन रिवर्स है उसी तरह हम एक फंक्शन बना सकते हैं रिवर्स निश्चल, नाम दे देंगे। तो आप जब रिवर्स निश्चल करेंगे तो वो अपने आप इसको रिवर्स करेगा, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग आती है। प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो आप सिंपली एक ऑपरेटर बन के रह जाओगे कि टाइप करोगे रिवर्स तो रिवर्स आ जाएगा, और रिवर्स होता कैसे ये नहीं समझ में आएगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव टॉट यू द प्रोग्राम हाउ टू रिवर्स द लिस्ट। ओके, तो मैं लिख देता हूँ रिवर्स a list। मैंने पढ़ा रखा है इनिशियल रिवर्स a list, शो थम्स अप। reverse a list without using the function that we have developed the program, first element with the last element, second element with the second last। good, okay। अब जब रिवर्स लिस्ट करेंगे तो सी हियर, अब पूरा प्रोग्राम हो गया। इसमें मैंने लॉजिक नहीं लगाया, सिर्फ लॉजिक मतलब सिर्फ एंटर का लॉजिक लगाया, फंक्शन यूज करके डिस्प्ले का लॉजिक लगाया, और रिवर्स करने का लॉजिक नहीं लगाया। रिवर्स लॉजिक आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। सो एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू टेक, तो 22, 44, 55, 66 लिस्ट वैल्यूज हैं, रिवर्स इज 66, 55, 44, 22। डन। So this is using reverse function, but in paper if I give write a program to reverse numbers without using predefined function reverse, तब आपके साथ कंडीशन हो जाएगी कि आपको रिवर्स नहीं यूज करना है, you have to make your own logic। okay, next point is your sort, SORT। अच्छा, एक जो बात मैंने और बताई थी वो भी सुन लो। सपोज मैंने यहाँ B कर दिया, B is equals to reverse, we can write it, and suppose मैंने ये सोचा कि रिवर्स होके B में स्टोर है, जबकि साफ कह रहा है कि डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट। तो आप देख लीजिए, प्रैक्टिकली मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ रिवर्स नहीं आएगा। रिवर्स इट विल नॉट शो रिवर्स रिजल्ट, दो इवन आई हैव रिटन रिवर्स। कंप्यूटर को कुछ पता तो नहीं होता, तो बेवकूफ है। तो मैंने सपोज 3 एलिमेंट दिया, 11, 22, 33। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ। पहली बात, फाइल सी रिवर्स लिस्ट लोकल पाइथन लाइन इन फॉर आई इन बी। तो बी नाम की कोई लिस्ट ही क्रिएट नहीं हुई है, समझ में आया। तो इसलिए आपने जो रिवर्स बी लिखा ये एरर दिखा देगा, तो इसलिए ये असाइनमेंट की जरूरत नहीं है। सिंपली यू राइट इट एंड देन यू राइट इट, रिजल्ट विल कम करेक्टली। गॉट इट? साफ लिख दिया, इसने क्रिएट नहीं करता है, तो इसलिए बी इज इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सॉर्ट। सॉर्ट में भी ऐसे ही है, राइट इट। इट sorts the items of the list, it sorts the items of the list in increasing order, in increasing order, ascending order, in ascending order। अब ये लिस्ट है, अब यहां पे हम लिख देते हैं सॉर्टेड लिस्ट। अब देखो बेटा, अभी मैं आपको फंक्शन से पढ़ा रहा हूं, अभी लॉजिक भी मैं पढ़ा सकता हूं, मतलब बिना सॉर्ट फंक्शन के भी प्रोग्राम को सॉर्ट करके दिखा दूंगा आपको। अभी मैं बना दे वो प्रोग्राम भी करा देता हूँ, सॉर्टेड लिस्ट। ओके, और यहाँ पे ए डॉट रिवर्स की जगह पे सॉर्ट लिख देते हैं। अच्छा, ये भी रिटर्न नहीं करता है, इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट, ये लिख लीजिए। इसमें भी नई लिस्ट क्रिएट नहीं होती है, बट सॉर्ट करता है। अब मैं आपको लॉजिक भी पढ़ाऊंगा सॉर्ट कैसे होता है, एंड सॉर्टिंग के बहुत सारे डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं। रन प्रोग्राम, सपोज मैंने 3 एलिमेंट्स दिया, जितने एलिमेंट्स दे दो, अब 100 दे दो ना, मगर आपका टाइम वेस्ट होगा। 2, 4, तो आना चाहिए 2, 4, 11। गॉट इट? लिस्ट वैल्यूज है 11, 2, 4 एंड सॉर्टेड लिस्ट है 2, 4, 11। गॉट इट? असेंडिंग ऑर्डर में ये फंक्शन है। अभी मैं लॉजिक भी पढ़ाऊंगा आपको, पहले मुझे कोर्स कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ। अब मान लो कि ये सॉर्टेड लिस्ट है इन असेंडिंग ऑर्डर, अब आपको इन डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। तो यहां लिखने से क्या लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी? निश्चल
मैं सिर्फ लिख दूं सॉर्टेड लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा? अभी भी असेंडिंग नो ऑर्डर, सर। अभी भी ये असेंडिंग ऑर्डर करेगा। गॉट इट? सो क्या ऐसा करें? इसके लिए एक फंक्शन है जो आपको यूज करना पड़ेगा, दैट इज फंक्शन। फंक्शन क्या? पैरामीटर है। रिवर्स फंक्शन सॉर्ट का पैरामीटर है। रिवर्स इज इक्वल्स टू, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। बस अब आपका सही हो जाएगा इतना सा करने से। रन मॉड्यूल, ओके, एंटर एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, ओके, 22, 44, 11। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, अभी तो लिस्ट डिस्प्ले किया है, 44, 22, 11 आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। करेक्ट है? और कोई सिर्फ एक निश्चल का थम्स अप दिखता है, नौ ऋषिराज, समृद्धि, सुरभि को नहीं समझा रहा है। सुरभि क्लासेस अटेंड किया करो बेटे। यस सर। ओके, चलिए गुड, सर ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको एक और पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद खत्म करता हूं। सॉर्टेड फंक्शन खत्म हो जाएगा, लास्ट फंक्शन है, टाइम बहुत तेजी से भागता है। सॉर्टेड, SORTED, sort and sorted both sorts the list in ascending or descending order, but sorted returns its value, or in other words, create a new list, or in other words, create a new list. अब क्या मतलब हुआ? पहली बार थोड़ा सा सिंटैक्स भी डिफरेंट है। सॉर्ट की जगह हम कर रहे हैं सॉर्टेड, और जो लिस्ट है यहां देनी पड़ेगी पैरामीटर में। आप चाहो तो लिख लो, इन सॉर्टेड द लिस्ट इज गिवन एज पैरामीटर, डिफरेंस लिखने में काम आ जाएगा। Whereas in sort we call by the list, that is we use the list object, a dot sort लिखते हैं, that is a is the object, और यहाँ पे a object is used as parameter in the sorted, and इसमें आप b कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, and यहाँ पर भी b कर सकते हैं, ठीक है। and now you run it, that is the basic difference। descending आएगा क्योंकि reverse is equals to true कर दिया है। थ्री एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, कितने भी कर दो आपकी मर्जी। ओह सॉरी, 402 एलिमेंट कितना चलाएंगे? बहुत ज्यादा हो गया। रन। सो सपोज 4 एलिमेंट्स, 11, 22, 4, 55, 55 नहीं 5, सो 22, 11, 5, 44 एंड बी में स्टोर हुआ है। तो सॉर्ट एंड सॉर्टेड समझ में आ गया? सॉर्ट एंड सॉर्टेड यू हैव अंडरस्टूड। सॉर्टेड में असाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स रिटर्न करता है। सॉर्टेड में पैरामीटर जो लिस्ट होता है वर्क्स एज अ पैरामीटर। ये सारी डिफरेंस है, ओके। अब एक चीज जो पढ़ाते समय थोड़ा सा एरर दिखा रही थी, तो मैं उसको जल्दी से क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे वीडियो में कोई मिस्टेक हो या वो नहीं हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग लॉजिक है, कभी कभी लॉजिक में मैं खुद भूल जाता हूँ कि वहाँ क्या लिखना था। सपोज मैंने लिखा 4, 5, 6, 8, 9 कुछ भी लिख लो, ओके। एंड देन मैंने लिखा
प्रिंट, एक्चुअली वहां पे कुछ गड़बड़ कर रहे थे, 5 इन ए, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ट्रू आएगा क्योंकि ए 5 ए में है, ठीक है। वहीं मैं लिख दूं 2 इन ए, तो 2 नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा। तो उस दिन ये थोड़ा सा ट्रू फॉल्स में कुछ कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि मैं लिस्ट टू लिस्ट ले रहा था, दैट्स व्हाई इट वाज शोइंग सम एरर और इट वाज नॉट गिविंग द परफेक्ट रिजल्ट। समझ में आ गया? सो अगर इन नॉट इन ऑपरेटर है तो इसी तरह करना। उसी तरह हम यहाँ पे करते नॉट इन, ऑब्वियसली 2 इज नॉट इन ए, सो ये ट्रू दिखा दिया, देखा ये ट्रू आ गया। सो ये एक पॉइंट थोड़ा सा उस समय अच्छे से नहीं चला था, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मेरा वही प्रोग्राम ढंग से नहीं चले। सो ये आपका एक फंक्शन था, बुक में दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने कहा कि अपने से कोई फंक्शन देख के प्रोग्राम बना के दिखा देंगे। चलिए ठीक है, ये इतना ओके। आज ज्यादा टाइम बचा नहीं है, नहीं तो मैं सॉर्टेड पढ़ा देता आपको प्रोग्राम। मुझे अगली क्लास में याद दिलाना, मैं आपको सॉर्टेड का अपने से लॉजिक बना के दिखाऊंगा। नेस्टेड लिस्ट लिखो, लिस्ट इन ए लिस्ट करवा दिया था ना आई थिंक। लिस्ट इन ए लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट। निश्चल ओके, तो इसको छोड़ो, ये बार बार बुक में लिखा हुआ है, मैं एक्चुअली बुक देख रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट इज योर 2 डायमेंशनल लिस्ट। 2 डायमेंशनल लिस्ट, 2 डायमेंशनल लिस्ट। In 2 dimensional list, a list has number of rows and number of columns, that is its shape has x and y axis. Yeah, it has x axis and y axis. X axis means row, y axis means column. अब मैंने लिखवा तो दिया, बुक में तो लिखता नहीं है। ये बुक में लिखा हुआ है 2 dimensional list is a list having all elements as list of same shape, that is a 2 dimensional list is a list of list। ठीक है, लिख लो 2 dimensional list is a list of list। अब मैं समझा रहा हूँ 2 डायमेंशनल कैसे बनाएंगे। सपोज यहाँ पर a इज इक्वल्स टू, है ना, डबल डायमेंशन d इज इक्वल्स टू, जो भी नाम दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है। स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन ए स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट फॉर 1 डायमेंशनल एरे, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर डबल डायमेंशनल। So 4, 5, 6, and then you write comma, then you write 7, 8, 9, and then you write comma, then you write 6, 7, 9, whatever you want to write, you write, and then you close. And now when you will print D, you will get the result as फर्स्ट रो, उसमें 3 कॉलम्स, सेकेंड रो 3 कॉलम्स। अब आप कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो बेसिकली जितनी भी लिस्ट होती है या एरेज होते हैं, ऑल आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दे फॉर्म अ सीक्वेंस। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं बोर्ड पे, ध्यान देना। नॉर्मली आई डोंट यूज बोर्ड। अगर ये एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 5, 3, ठीक है। सो इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3। It has 3 rows and 3 columns. X axis is 3 and y axis is also 3। 3 rows and 3 columns। ओके, ये कब से वेटिंग में है यार, अक्षय कुमार। ओके, now see here,
this index number is basically index number is basically 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. रिमेंबर दैट, इससे आपको मैट्रिक्स समझ में आएगी। पहला वाली जो वैल्यू होगी, फर्स्ट रो इज 0 एंड फर्स्ट कॉलम इज आल्सो 0, तो 0 0 फर्स्ट रो फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। Okay, then 0 1 5 0 2 6, first row all column completed, second row that is 1 index again, column index is 0 again, 1 0 1 1 1 2, then third row because it's starting with 0, the third means 2 2 again column is 0, then 2 1 2 2 this way. Have you understood? फिर इसको मैं अगली क्लास में थोड़ा डिटेल लूंगा, अभी इतना रखते हैं। सो मैट्रिक्स मीन्स, अभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स तो 2 into 3 भी हो सकता है, 3 into 4 भी हो सकता है, 4 into 4 भी हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई विल टीच यू मोर, एंड मोस्ट प्रोबेबली next class will be my last class of list, and after that I will start string concepts. Take care, bye, we'll meet in the next class.